Les adjectifs démonstratifs. See, demonstrative adjectives क्या होते हैं? Like this, that, these, those. अब this, that में क्या फ़र्क होता था? English में this is anything nearby us, that is far away from us. These nearby, far away को those बोलते थे, right? This is only the difference. फ्रेंच में हम दिस दैट के लिए एक चीज़ यूज़ करेंगे, दीज दोस्त के लिए एक चीज़ यूज़ करेंगे. फ्रेंच में नियर फार का कोई ऐसे अलग से नहीं लिखते हम. दिस इज इन फ्रेंच वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, लाइक दैट. ठीक है. अब अगर आपको स्पेसिफिक शो करना है कि कोई चीज़ हमारे पास है, तो उसके लिए आप सी और ला लगा सकते हो. सी इज़ फॉर नियर बाय थिंग, ला इज़ फॉर फार. ओके. अगर आपको स्पेसिफिक शो करना है तो, नहीं तो वैसे तो अभी आप ये कहीं पढ़ोगे भी नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल इफ कभी बुक में आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज. सी इज फॉर एनीथिंग दैट इज नियर बाय एंड ला इज फॉर फार अवे. These are just adjectives. Now for masculine, singular, feminine, singular, vowel, and then plural. Plural. Okay. For masculine singular, we use sir. Feminine singular, we use Seth. For voyelle, we use Seth. And for plural, we use say. So, Seth, Seth, sir, say. and the violet means sir or sir. Say. Say, okay. For Say, example, if we say this book, for example, okay, okay. Now, this book is what is leave, livre. Le livre or la livre. mm, It is masculine or feminine? masculine. Yeah, masculine. So it will be ce livre. Girl. Girl is masculine or feminine? Girl is feminine, of course. Okay. So it will be cette fille. Set, free. Say stilo. Say stylo. Is this clear, like how we use demonstrative adjectives in French? You have it on that. मैम जो सीई और सीईटी की प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है सर? Yeah. No, no. That is so and that is set. जो सीईटी है CE, Set. both are CETTE or CET, set, set. Yeah. तो हम
सी ई टी वाले में टी को प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट वर्ड वोवल होने वाला है तो टी प्रोनाउंस होगा. ओके. Yeah, like if we say this friend, so it will be Setami. Sitami. Because, yeah, ओके ओके. Setotel, so it will be pronounced. सेटोटेल. So T pronounce होगा O के साथ. That's why we pronounce it. जो भी आपने पढ़ा था say, C और EST, that is also ये so और EST होता है. This और is. So it's और this is के लिए दोनों के लिए हम say यूज करते हैं. किसमें मैम ये सी और ई एस टी? This is EST is it is no at verb. हम्म. तो हम दिस इज के लिए से लिखते हैं सेंटेंसेस में. ये फिर मैम मैस्कुलिन में आएगा ना? यस. Okay. Okay. Now, first sentence. This house is beautiful. How can I write it in French?
मेजों दो, ब्यूटीफुल के लिए पता नहीं क्या होती है प्रोनाउंसिएशन। Cette maison est ओ मेजों। beautiful is belle. Cette maison est belle. This man is kind. Cet सब homme, स cet homme est gentil. ओके, ये प्लूरल का इसमें फिर सेट आएगा। ओके ओके। Now, uh, children. से enfants, Yeah, ces enfants sont smart. ए यू क्या होता है? स्मार्ट। Ces enfants sont intelligents. ये तो इंटेलिजेंट हो गया ना। एक वो भी अ, जैसे ब्यूटीफुल का अपोजिट स्मार्ट, जैसे अब हम उसके लिए करते हैं तो वो चीज नहीं आएगी। चिल्ड्रन आर स्मार्ट, अच्छा इंटेलिजेंट लिस्ट। Intelligent के लिए we can use no smart. These flowers are interesting. So, ces fleurs sont intéressantes. हाँ, आप ये नोट कर लो एग्जाम्पल्स के साथ.